Yeah. Okay. Tell me what are acids? Can you tell me what are acids? Citric acid. What are acids? Characteristic क्या होती है acid? What do you mean by acids? Yeah, if a substance is given to you, how do you identify it as an acid? आप बता कैसे सकते हो कि ये acid है या base है, whatever it is? I'll tell you. See, when we talk about substances, acids and bases, they are substances. They may be naturally occurring or they may be found. They may be prepared in lab. When you touch them, अगर वो touch करने से water जैसा touch हो रहा है, then it is acid. If they are slippery to touch, they are base. Getting? अगर आप touch करो उसे और water के जैसा touch feel होता है ना, तो it is acid. If you touch it and it feels soapy or slippery, it is base. Lokesh, are you there? Because your video is stuck. Any network issue? No. एक minute. Don't. The video was stuck, so I thought maybe any network issue. Chalo. So when you touch any liquid, watery to touch is basic, acidic, and soapy to touch is basic. Can you taste and tell the difference? Taste करके No. difference. अगर आप टेस्ट करोगे तो एसिड्स कैसे देंगे? Sour to taste. सॉर टू टेस्ट क्या होते हैं, एसिड या बेस? Base. सार टू टेस्ट इज एसिड. एसिड खट्टे होते हैं, ठीक है. एंड बिटर टू टेस्ट कड़वे, बेस. And bitter also, no? बिटर इज बेस एंड सार इज एसिड. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. कर्ड होता है दही, Yes. खट्टा होता है. लेमन खट्टा एसिड होता है. Yes. एसिड. कौन सा एसिड होता है? लेमन. Citric acid. Citric acid. और कर्ड में In curd there lactobacillus is present. which acid is present? Citric acid in lemon. And in curd? Don't know. Neil? Same. Citric. Lactic acid. Yes, there The because in lactobacillus bacillus. lactic acid in curd, citric acid in lemon. और लेमन जैसे सारे फ्रूट्स होते हैं ना, लेमन है, then you have oranges, lime, संतरा. they all contain citric acid and it is sour in taste, खट्टे होते हैं. So this is acid, but it is not harming you. आप आराम से खा सकते हो, बस टेस्ट में खट्टे लगते हैं, बाकी नुकसान थोड़े ना होता है, right? So No. the acids and bases which are found in nature are called as organic acid, जो हमें नेचर में मिलते हैं. There are acids which are also prepared in laboratory. कुछ ऐसे acids होते हैं जो हम लैब में बनाते हैं. They are harmful, no? They are harmful. और उनको हम बोलते हैं mineral acid या inorganic acid. We call them as mineral acid or inorganic acid. इसके अलावा there are lots of fruits and vegetables जहाँ पे हमको acids nature में मिलते हैं. जो भी चीज खट्टा होता है ना, all kind of lemon, citrus और ये वाले fruits हैं. Then you have आंवला, खट्टा होता है आंवला. Yes, yes. It also contain acid. And Yes. tamarind, imli, it also has Tamarind. acid, right? Chili, mirchi, उसमें भी acid Don't होता है. have it. No. It have acid, though it is not sour in taste, but उसमें acid होता है. खट्टी नहीं होती है वो spicy होती है. So much लेकिन उसमें spicy, acid, spicy. पर उसमें acid होता है, ठीक है. So there are substances, lots of substances होते हैं, बहुत सारे nature में fruits, vegetables ऐसे होते हैं जिसमें आपको acid मिलेगा. So all these acids are easily edible. आप खा सकते हो, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, right? So these acids are organic acid or natural acids. They don't harm us at all. हमको बिल्कुल harm नहीं करते, ठीक है?
बेस किस में मिलेगा? बेस इज बिटर टू टेस्ट, कड़वे होता है। कहाँ मिलेंगे? करेला। Mix that. करेला कड़वा होता है पर उसमें बेस नहीं होता। और किस में मिलेगा बेस? नेचर में। यू डोंट गेट इट, है ना? नेचर में यू डोंट गेट द बेस, यू कैन प्रिपेयर द बेस। सारे सोपी सॉल्यूशंस होते हैं ना, क्लीनर्स, शैम्पूज, हैंड वॉशेस, सोप्स, डिटर्जेंट्स, दे ऑल कंटेन बेस। आपने भी देखा कि व्हेन फेस वॉश करते वक्त मुंह में थोड़ा सा सोप चला जाता है तो बिटर टेस्ट आता है, राइट? Yes. Because it contain base. So bitter taste is because of base, and it is present in all kind of cleaning agents, shampoo, detergent, soap, hand wash, shampoo, इन सब में होता है, ठीक है? Now फिनेल। phenyl में होता है, yes. So if you are given acids and bases, you can identify first by touching. Touch करके देख लिया, अगर slippery सा लग रहा है soapy जैसा तो it is base, otherwise it is acid. Or you can taste and see. If it is tasting sour, it is acid. If it is tasting bitter, it is base. But can you touch and taste anything given to you? हो सकता है कि वो harmful acid हो, harmful base हो। आपसे नो। आपको जब कुछ भी दिया जाता है ना to test, हमने टेस्ट ट्यूब में डाला है, it is given to you to test whether it is acid or base. It is never suggested to taste it directly. हमें नहीं पता वो क्या है, आपको टेस्ट Harmful करके it So would you be should harmful. Yes, you should never touch and taste anything. आपको ऐसे नहीं कि सीधे दिया कि क्या है, सीधे टच कर लिया तो उंगली चल जाएगी, या टेस्ट कर लिया तो you will burn your mouth, tongue. So it is never suggested. ठीक है, कि जब तक हमें पता नहीं हो कि ये harmful नहीं है, we should not touch and taste anything. So how will we know कि whether the substance is acidic or basic? अब हम ना टच कर सकते, ना टेस्ट कर सकते, तो हम कैसे बताएंगे कि ये एसिड है, ये बेस है? How will you tell? Tell me, कैसे बताओगे? बिकॉज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। Okay, how will you see ionic compounds? आपको कैसे दिखेंगे ionic compound? आपको दिखेंगे ions निकलते हुए? Don't see. Recapitulation. What is it? क्या होता है? Ionic compounds. Can you see ionic compounds? दिखेंगे ionic compounds. Ions दिखाई देंगे. Basic means molecule basic radicals and acidic radicals. Can you see them in a solution? अगर मैं आपको एक टेस्ट ट्यूब में लिक्विड डाल के दे देती हूँ and I ask you to identify it as acid and base, आपको उसके अंदर acid radical, basic radical निकलते हुए दिखेंगे क्या? No. और आपको मना किया है कि don't touch and taste anything, so you should No. not touch and taste it. अब कैसे पता लगाएंगे कि the given substance is acidic and basic or basic? How will you identify it? Don't know. Neil, any idea? लिटमस पेपर। Yes. What do we call these litmus paper and all? Indicators. pH paper. All these things, they are called as indicators. There are substances and materials which when added in acid and base, they change their color. And because they change their color, they help us to identify that the substance is acidic or basic. Acid में अलग color आता है, base में अलग color आता है. So we easily identify, right? And we have categorized it into 3 categories. Natural indicators, जो nature में मिलते हैं. Synthetic indicators, जो हम lab में बनाते हैं. And olfactory indicators. You know what are olfactory indicators? No. Olfactory का मतलब होता है smell से. So those You are indicators which what Neil? Lokesh? No, your voice was cracking, now clear. So olfactory indicators are indicators which are identified with the help of smell. जो लिटमस पेपर है और जो बाकी इंडिकेटर्स है वो तो हम कलर चेंज से पता लगाते हैं ना, कलर चेंज हो गया, बट olfactory indicators में स्मेल चेंज हो जाती है. So we identified by the help of smell. So that is why they are called as olfactory indicators. So we have natural indicators obtained from nature,
We have synthetic indicators which are prepared in lab, and then we have the olfactory indicators which are identified by smell. Can you name some indicators? Yes, ma'am. Indicators के नाम बता सकते हो? Litmus paper. और आपके कौन से हैं सिलेबस में? pH paper. और लिटमस पेपर कौन से Ma'am, where we will get them? All color, all Red multicolor. and blue. And what is the change in presence of acid and base? If it is acid, it turns red, and if it is basic, it turns blue. Red to blue is basic and blue to red is acidic, right? This is the change. How will you identify with the Yes. pH paper, your Yes. Lokesh? pH paper से कैसे पता करोगे acid है या base है? Your network connection is not very good today, Lokesh. Crack or revoice. Yes, ma'am. There are 14 to 15 colors. हाँ, तो how will you identify? Till 14 there are 14 colors, no? So in the shade from 1 to 7, कहाँ पे होता है ये Okay, shade? 1 to 6, no? याद करना yes, पड़ता है yes, क्या हमें? they are acid and 7 is neutral and 8 to 14 is base. If you are given a solution, can you look at the solution and identify कि इसका pH तो 7 है, इसका तो 6 है, बता सकते हो? No, by dipping the pH paper. If we dip the pH paper, there's a color change and that color change is matched with the chart given with the paper. जो pH paper आता है ना, उसके साथ एक chart भी आता है. ठीक है? Yes. हम उस पेपर को Yes. डिप करते हैं, जो कलर चेंज हुआ उसको चार्ट से मैच करते हैं कि व्हाट इज द पीएच एंड देन इट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई. समझ में आया? दिस इज हाउ इट हैपेंस. सो पीएच पेपर. और कोई इंडिकेटर का नाम पता है? एनी अदर इंडिकेटर लिटमस और पीएच के अलावा? No. यू नो नील? No, teacher. You know turmeric, haldi. Yes, haldi. What we Yes, do, yes. we make a paste of turmeric, and if we put acid to it, there's no change. But if we put base to it, it will change to reddish brown in color. ठीक है? अच्छा, एक चीज नोटिस की है कि when there is a curry stain on your clothes, कभी कपड़ों पे सब्जी गिर जाती है, सब्जी में हल्दी होती है, right? And you wash it with soap, तो वो जो stain है turns red for time being. नोटिस नहीं किया है तो आगे से करना कभी कि whenever there's a curry stain on your clothes and you apply soap on it, the curry stain turns red because the curry stain has turmeric and soap has base. तो वो उसकी प्रेजेंस में रेडिश ब्राउन हो गया. एसिड होता है तो कोई चेंज नहीं होता, वो येलो ही रहता Teacher, if it is neutral, then है. Then also there will be no change. ठीक है? If it is neutral, then it is not going to change any condition, but it can be acidic and basic depending क्या है. ठीक है? So acidic basic में change होता है. In case of that turmeric, there's no change in acid, but in case of base it changes to reddish brown. ठीक है? अच्छा, एक चीज तो बताई नहीं. Where do we get litmus from? Litmus कहाँ से मिलता है लोकेश? Your voice science is... laboratory. लिटमस पेपर जो Teacher, बनता है in ना, daily to daily. लिटमस पेपर किससे बनता है? लिटमस सॉल्यूशन से बनता है. लिटमस सॉल्यूशन कहाँ से बनता है? Don't know, teacher. You know what are lichens? Lichens, yes, yes. They are grows in the sea water. No. You know what are lichens? नील, आपको पता है lichens क्या होता है? Lichens. No. No, No. teacher. अच्छा, एल्गी फंगस पता है? एल्गी क्या होती है? फंगस क्या Yes, होती है? yes. आपने पढ़ा होगा कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगस.
सिम्बायोसिस पढ़ा है? नहीं पढ़ा सिम्बायोसिस? जब एल्गी और फंगस साथ साथ रहते हैं, एल्गी फूड प्रिपेयर करके फंगस को देती है एंड फंगस एब्जॉर्ब्स द न्यूट्रिशन गिव टू एल्गी। ये होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, इसको बोलते हैं लाइचेंस। सो लाइचेंस में से हमको लिटमस डाई मिलती है, सो इट्स अ नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, वी गेट इट। नाउ कम्स दी थिंग, ये तो सुपरफिशियली है। एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर और बता देती हूँ आपको। यू नो द स्मेल ऑफ अनियन? अनियन की Yes. स्मेल Yes. पता है ना कैसी होती है? इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, Yes. right? So if what we do, we take a cloth piece, rub onion on it. इतनी अच्छी तरह रब करते हैं that cloth have a strong smell of onion. बहुत तेज स्मेल आती है अनियन की उस क्लॉथ में। We cut the cloth in two piece. एक पीस को हम एसिड में डिप कर देते हैं, दूसरे पीस को हम बेस में डिप कर देते हैं, and we leave it for some time, right? After some time we see the cloth piece which was dipped in acid, उसमें there is no change, अभी भी अनियन की स्मेल आ रही है। But the one which was dipped in base, उसमें अनियन की स्मेल खत्म हो गई, नहीं आ रही। Yes. Not coming. ठीक है, so we can smell and identify. स्मेल करने से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना? This is called as olfactory indicators, where you can smell and Yes. tell. Other than onion, you can also use clove oil. You know what is clove oil? No. लौंग होती है ना, लौंग, Yes. that is clove oil. Spicy. So हाँ, strong smell होती है। Then there is one vanilla extract होता है, उसकी भी strong smell होती है, that can also be used. Janvi, we have a new joinee, Janvi. Is there, teacher? No, Janvi is there. Janvi is there. Janvi, can you please unmute yourself? Janvi, are you all from the same school? No. Neil and Lokesh are from, you are from different places also, right? Neil is from? कहाँ से हो नीला? Lonavala. हाँ. Lonavala. Lokesh, you are from? Nashik. So you are from different places. Janvi, can you please unmute yourself? Yes, Janvi. Oh, she has left. She left. Chalo. So these are the indicators which help us to test whether the substance given is acid or base, right? When you are said not to touch or taste anything, never ever do this. If you are given anything to test, don't just like that put a hand in it or taste it. Kabhi nahi karna aise. That may be harmful. So you can identify by using a litmus paper or any olfactory indicator or turmeric, whatever we have. So we can use any indicator to test it. आप कोई भी इंडिकेटर लेके टेस्ट कर will get litmus paper, ma'am? can taste anything. ठीक है, yes लोकेश? Where we will get litmus paper? In medical? हाँ, मेडिकल शॉप नहीं, जहाँ पे ये मिलता है ना केमिकल्स एंड ऑल, लेबोरेटरी का सामान मिलता है, you will get it from there. No, in the areas. You get the shop which gives you laboratory things. Lab में यूज होने वाली चीजें मिलती है ना जिन shops में. I don't know what we call these shops as. So they will be in the big cities, no? You may be having it in your school. आपकी online classes होती है school की? But Yes. So has any teacher shown you the experiment? अच्छा, रुको मैं No दिखा. Yes. online. I'll share my Yes, screen. Online yes, yes. experience. I'll share my screen, है ना? And I'll show it to you. Wow. Can you see? No. मेरी screen दिख रही है? Yes, Yes. yes. Something transpiration. हाँ, that is of 10th class. Litmus paper experiment. See now.
Can you hear the Not sound also? audible. No. Not audible? No. एक मिनट रुक जाओ. एक मिनट बेटा. I don't know कहाँ से आवाज आएगी. अभी आई Miss, it is आवाज? in the Can you hear the No. sound also? no. No. Both of you can't hear the sound. No. एक मिनट. Not audible, ma'am. एक मिनट रुक जाओ, है ना? हाँ. I don't know कैसे होगा ये. Miss, it is in Zoom meeting only. I know. That setting. कहाँ पे होता है? Or else can I share the screen, ma'am? आ गया. And blue litmus Now audible? paper, and I'll show you why Yes. in a Yes, second. yes. And we're going to Can you start from? chemicals that we See, experiment is now have been started. working with. There are 3 liquids. You don't know which is acidic, which is basic, which is neutral. ठीक है? Can you But see you the can litmus? start from first, ma'am. First. Okay. Now, to do the litmus test, you need litmus paper. And because it's a lockdown, Can I you see the litmus paper lying blue or red color? Yes, ka? yes. Yes. This is don't actually actually how have they any look. litmus paper at home. And I went to the chemist and they didn't have any either. So instead, I've made litmus paper strips. Now you get red litmus paper and blue litmus paper, and I'll show you why you need both in a second. And we're going to stick to the 3 chemicals that we have been working with all along. Over here, we have bicarbonate of soda, which has been diluted in water. We have lemon juice, which has also been slightly diluted in water. And speaking of water, here is water. So what he has taken, this liquid is base, this is acid, and this is neutral simple water, right? Yes. Now he'll sir. show us that how the color of the litmus changes in acids and base. So when we're testing So these, middle one is we need to use Middle one is citric acid, lemon juice. And this side one is base and this is simple water. both the red अच्छा, and एक the चीज और देखो कि base and water is looking same. ये base है, ये Yes. water. So you cannot Yes. identify by looking. तो test तो करना पड़ेगा ना हमें to clarify. blue litmus paper, as you can see over here. And the reason for that is the following. When you put blue litmus paper into a base, and you put When you put blue into base, nothing happens. Because base में Nothing तो red to blue होता है. और blue डालोगे तो कुछ भी नहीं होगा, right? pull it out, There's no change. the blue litmus paper Yes. remains blue. So I was thinking of it as the 3 Bs. Blue, base, blue. Does it make any sense? The blue remained blue, therefore it is a base. Hope that makes sense. When you put the red litmus When you paper add in red. and you pull it out, the देखो. red litmus paper turns blue as well. Remember, Turnak. blue base. And therefore we can The red litmus paper clearly changes to blue, which shows that the given substance is Okay. base. tell that the bicarbonate clear of soda change is in fact a base. आराम से पता चले. Moving on to lemon juice. If I take the red litmus paper and put it into the lemon juice, which we know is an कुछ acid, भी नहीं No, it होगा. is blue. No change. we can see that the red litmus paper Will remains remain red. red. Therefore, it is an acid. However, if we put the blue litmus paper in, and remember the blue remained blue in a base, this time See, the it blue changes litmus to red. paper goes red,
which indicates that the lemon juice here Clear is red, indeed which an indicates acid. that it is But the acid. fun part comes when you get to water. When you take red litmus paper and put it in water, No change. Red will remain red. it remains red. And Blue when you will put blue remain blue. litmus paper in water, it remains blue. Right? No change means it is neutral substance. So what does that mean? I would like you to think about that, and you can let me know either in the comments. So red to blue is base, blue to red is acid, and no change is neutral. Acid and neutral. ठीक है, ये remember this by below heart. or in your science. समझ में आ गई ये बात? Clear? Understood? Yes. How acids and bases change the color of litmus paper. It could be neutral, acidic, and base. ये तो हो गया indicators. Now when we talk about chemically how acids and bases are different. Your voice is cracking. Your voice is cracking, madam. So chemically, now it's clear? Yes. So chemically, when we talk about acids and bases, what is the difference between them? Acid base में क्या difference है? Chemically. अरे एक second. ये तो हो गया physical changes, right? Touch, taste, change of indicators. These are all are Yes. physical properties. Chemically, what is the difference? अच्छा, I'll write. मैं आप screen share करके I'll write the formulas of some acids and bases. आप मुझे बताना what is the difference. ठीक है? Can you see the white screen? Yes. Yes. H. What is it? What is HCl? HCl, hydrochloric acid. Right? Hydrochloric acid. And what is NaOH? क्या होता है? See, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना. It is not possible to learn all the formulas. ठीक है? ये तो पता है हमें कि we cannot learn all the formulas of acids and bases. What we can do is we can look at the formula and identify acids and bases. ये तो आपको पता चला है क्या है? NaOH, anything containing OH. कोई भी ऐसी चीज जिसमें OH आता है, जैसे कि NaOH है, KOH है, ठीक है? सॉरी, KOH है, Mg है, ये होता है MgOH whole twice. अगर see, remember, if you see OH, it is a base, right? Getting? Yes. अगर आप कोई फॉर्मूला देखते हो Yes. उसमें आपको OH दिखता है, so it is 110% base. अगर वो OH किसी मेटल के साथ, right? And if you don't find OH और आपको मिलता है जैसे HCl है, then if you get H2SO4, sulfuric acid, Sulfuric acid. हाइड्रोजन मिलता है, that is acid. ठीक है? H2SO4, then you have HNO3, you get H here. So in the formula, if you find H, it is acid. If you find OH, it is base. Getting? Yes. Potassium hydroxide. Oxide. OH means hydroxide and H ions are formed by acid. ठीक है? Right? So that means what now? What do you mean by this के OH है, H है? Whenever you add acids and bases in water, they are going to produce ions. Can you tell me what do you mean by ions? Neil Lokesh, ions. Positive or negative. Positive ion and Science. negative ion. Yes. So H plus will be formed by acid. Acid. OH minus will be formed by, Base. yes.
जब भी आप एसिड्स और बेस को पानी में डिसॉल्व करोगे तो H+ आयंस विल बी फॉर्म, राइट, if it is acid. OH ions will be formed if it is base. ठीक है, getting? So acids always produce H+ ions and bases always produce OH ions. अब इससे क्या पता चलेगा, हमें दिख थोड़े ना रहे H ion और OH ion, दिख रहे हैं क्या आपको? No. आपने बेस एसिड को पानी में डाला तो आपको दिखा क्या H ion जाता हुआ? No, teacher. या जब आपने बेस को पानी में डाला तो आपको OH ion जाता हुआ दिखा? No, teacher, we need microscope, no? नहीं, we don't, we cannot see with microscope also. हमें फॉर्मूले से पता चलता है. Just by looking at the formula we identify कि ये जो KOH है तो ये OH ion बनाएगा, ये H3 है तो ये H+ बनाएगा, ये H2SO4 है तो ये H+ बनाएगा. Right? We can identify by the formula कि कौन सा आयन बनाएगा. ठीक है? But Yes. remember, if H+ ions are produced, it is always an acid. If OH- ions are produced, it is always a base. हमेशा base होगा. Clear? Yes. Yes or no? That means if you are dissolving acids and base in water, they are breaking down into their ions, H+ and OH- minus. Ions में break हो रहे हैं. Yes. Yes. And whenever anything break into ions, can it conduct electricity? Yes. What, teacher? अगर Pardon? कोई आयंस बन रहे हैं तो वो आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में हेल्प करते हैं. If anything break Don't into know. ions, it helps in conduction of electricity. Remember this. कि अगर कोई आयंस में ब्रेक हो रहा है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में हेल्प कर रहा है. So that means when you are dissolving acids and bases in water, they are helping in Yes. conduction of electricity. इसका मतलब हुआ एसिड और बेस गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के. ठीक है, क्योंकि जब आप एसिड को पानी में डालोगे तो H+ आयन बनेंगे, बेस को डालोगे तो OH आयन बनेंगे. इन बोथ द केसेस OH ion. आयंस विल बी फॉर्म. दोनों केस में आयंस बनेगा, राइट, एंड आयंस हेल्प इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट. समझ में आई बात? Yes. अब क्या होगा अगर हम एसिड बेस को मिक्स कर दें. एसिड एक हमने ले लिया HCl, हम उसको मिक्स कर दें NaOH के साथ. क्या NaOH. एक एसिड है. New product will form. What will be the product? NOH plus ClNa. NaCl plus H2O water. Na. सॉल्ट बनेगी, सॉल्ट. ये ठीक है. And This water. एंड वाटर. दिस NaCl जो होती है, ये NaCl में क्या है, आपने चैप्टर पढ़ा ना मैटर वाला, पढ़ा है मैटर? Yes. अच्छा, Yes. मैटर जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसमें पढ़ा है कि मेटल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, A negative. राइट. सो हियर वी हैव मेटल Na, तो ये हो गया पॉजिटिव. OH is negative. Cl minus. Oh, sorry, yes. Cl minus. So दोनों के combination से बन गया NaCl. So you have the positive radical here, the negative radical. दोनों radical आ गए, है ना. And जो positive होते हैं वो basic होते हैं, जो negative होते हैं वो acidic होते हैं. So we have the basic radical as Na plus and acidic Na+. as Cl minus. Getting? Yes, no? Yes. So metals जो भी होते हैं जो पहले लिखे जाते हैं they are the positive ions or the basic radical, और जो बाद में लिखे जाते हैं नॉन मेटल होते हैं they are negative radical.
एक आपकी बुक में टेबल दी हुई है ना, पेज 58 पे, एसिडिक बेसिक रेडिकल की दी हुई है ना? Yes. हैव यू फिल्ड दैट टेबल? फिल करी है वो टेबल? No. हैव यू Yes, fill teacher. this? कर ली पूरी फिल? Teacher, it is cancelled. Yes. कैंसिल्ड है मतलब सीबीएसई ने हटा No, दिया ये? teacher, not cancel. Not cancel. No. अच्छा, इवन So इफ इट इज, because of COVID, 30% of portion is cancelled. No. In I know, this part is there. दैट्स ओके, बट आपको एक बेसिक आइडिया पता होना चाहिए. सो ट्राई टू फिल दिस टेबल जितनी भर सको. मे बी नॉट बी यूज्ड इन द एग्जाम, पर वो इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो आप जो भी फॉर्मुलेज लिखे हुए ना, आइडेंटिफाई देयर बेसिक एंड एसिड रेडिकल. टाइप मत लिखो कि वो एसिड है या बेस है, दैट इट्स ओके, बट आइडेंटिफाई द एसिड एंड द बेसिक रेडिकल. ये तो So radical means रेडिकल पता लगाओ कि एसिडिक कौन सा है, बेसिक कौन सा है.